What is the NABARD expansion? Sorry sir, I have no idea about it. फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? Monetary policy, sorry ma'am, I'm not sure. To increase the gold reserve, Prime Minister has brought two schemes. Sorry sir, I'm not up to date with that. What do you mean by Swarna Gold Bond? Sorry sir. May I come in? Good evening, Yes, sir. Good evening. Good evening, ma'am. Yes, Mr. Vijay Singh Lamba. So that's my father's name. Okay. Yes. You are I'm Bhavesh Lamba, sir. Bhavesh Lamba. Yes. Okay, what's the meaning of Bhavesh? Ma'am, it's basically a alternative name for Lord of Education. Okay. Lot of? Education. Okay, so tell me about yourself. As you already know, my name is Bhavesh Lamba. I'm from Bhiwani, Haryana. I have done my graduation in civil engineering in 2018. Okay. Afterwards, I worked for 2 years in my field, and after that, I started preparing for banking exams. Okay. My father works in Railway Protection Force as a constable. My mother is a homemaker, and my younger sister is already working in banking. Okay. In Which which bank? bank? Sir, Haryana Gramin Bank, sir. In the same RRB, I'm going for the interview. Good. Okay. So you are a sure candidate. Well, sir, I feel so. Good. What is the functions of RRB? Sir, RRB's basic function is for the rural development and private sector lending funding, sir. So do you feel other scheduled and commercial banks are not doing any rural development? Sir, other banks are doing a great job in penetrating the rural areas, but there is a need for the RRBs is still there. RRBs go for the 75% of PSL, whereas that share of other sector banks is less. They have other works, they have other sectors to focus on as well. Good. Mm. In what field your sister is working? So she's a multi-purpose assistant. What does it mean? So she's a clerk, sir. Hmm. She Doing works all- in day-to-day help. Earlier there is a cashier, clerk like that. Now it is not a single window operator. Yes, sir. Everything, they will do the cash work as well as transfers and everything. What is the NABARD expansion? Sorry, sir. I have no idea about that, sir. I will update myself later. Very good, very good. आप में कोई लीडरशिप क्वालिटी है या फिर कभी आपको कोई एक्सपीरियंस रहा है? मैम, सिविल इंजन मैं जॉब स्टार्ट करने से पहले मैं प्रोफेशनली क्रिकेट परस्यू करता था. तो आई वाज डूइंग सम गुड जॉब इन दैट फील्ड. Okay, okay. बट ड्यू टू सम रीजंस आई हैव टू स्टॉप दैट. बट उस खेल से मुझे ये सीखने को मिला कि एक आपको टीम को साथ लेके चलेंगे, टीम को बढ़ाएंगे तो पर्सनली भी आप ग्रो करेंगे, टीम भी ग्रो करेंगे. सो आप सिविल इंजीनियर हो तो आपने 2 साल जॉब करी, तो उसके बीच में आपको क्या मतलब ऐसा लगा कि आपको बैंकिंग का ही फील्ड चूज करना है? मैम, बैंकिंग टेम्पटिंग है मैम. एक हम लोगों ने 2019 के अराउंड केसीसी लिया था मैम हम लोगों ने. ओके ओके तो मैं मेरे फादर के साथ उसके लिए काफी बहुत घूमा था मेरे फादर के साथ. ओके और उससे समझ में आया था कि आप टेबल से उस तरफ रहेंगे तो इट्स रियली गुड फॉर यू. ओके ग्रेट. अपनी कोई स्ट्रेंथ बताइए आप जो आपको हेल्प करेगी, मतलब आप जब ऑफिसर ग्रेड पर जाओगे मैम, यू कैन यूज इट. मैम, from the feedbacks I get, I think I'm a people's person. ओके I get to know them really good. I blend in perfectly sometimes. ओके. एंड वीकनेस क्या है फिर आपकी? I think I'm a little lazy ओके. on some things. But lazy but- people are smart because Well, I'm ma'am, also lazy. we have to do the work in less time. Yeah, actually we have smart ways to do the work. Really. आप जैसे हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणा की क्या खासियत है, और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत निकल रहे हैं वहाँ से, तो कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? क्या मैम, जानते हैं आप अपने स्टेट के बारे में? मैम, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं. अभी खेलो इंडिया में भी हम फर्स्ट पे आए हैं. हरियाणा ने फर्स्ट पोजीशन वो की है, और ओलंपिक में भी मैम अच्छा नाम किया है इस बार हरियाणा के प्लेयर्स ने. ओके. एंड हॉबीज क्या हैं आपकी? मैम, आई लाइक टू गो टू द फील्ड इन द इवनिंग टू हेल्प द यंगर क्रिकेटर्स ओके. in that way. I used You to, love cricket, right? yeah. I still play club cricket. Okay. I'm just not following it professionally. कि इंडिया ने कितने बार वर्ल्ड कप जीता है अभी तक? मैम,
इंडिया ने 2 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जीते हैं और एक T20 वर्ल्ड कप जीता है। ओके ग्रेट। फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? मैम मैं जसप्रीत बुमराह को अपने फेवरेट कैटेगरी में रखता हूँ। ओके ओके बाकी आई यूज्ड टू प्ले विद ऋषभ पंत, सो ओके दैट्स अ फ्रेंड सो। ओके ग्रेट। Yes. What is blue revolution? Sir, blue revolution is associated with the aquatic field. Very good. White revolution? Sir, white revolution is associated with the milk production in India. Who is the father of white revolution? Sir, it was Professor Verghese Kurian. ग्रीन रेवोल्यूशन? Ma'am, green revolution was started by Dr. M.S. Swaminathan, ओके and it basically included कि modern techniques agriculture में आए। सपोज आपको इंडिया से जो भी है पेमेंट वो आपको यूएसए भेजनी है तो क्या आप Payment यूज gateway. करोगे? पेमेंट गेटवे क्या यूज करेंगे आप? I'm not sure about this. I'm sorry, but I think I have this idea of Swift code. Yeah. Using Swift technique, we can Right. use that. वी कैन यूज। ओके वेरी गुड। आपने अभी देख रहे हो आप ऑनलाइन बैंकिंग बहुत चल रही है, लाइक आप पेमेंट गेटवे भी हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, ठीक है? तो आप बताएं आप कितना सहमत है इस चीज से, इसके प्रॉस और कॉन्स क्या हैं? It's good for the economy. जितना ज्यादा मनी फ्लो होगा उतना इकोनॉमी बूस्ट करता रहेगा मैम आगे, और ये टाइम बचाता है आपका। It's really easy to use. Still there is some hope for, there is some window for ओके कुछ इसके कुछ ऐसे भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं जो आपको लगता है कि किसी हद तक ये कुछ नेगेटिव भी है, कुछ मैम चीजें? स्कैम्स को ये इनवाइट कर रहा है मैम, तो इसलिए जितना ज्यादा हम इसके अवेयरनेस फैलाएंगे उतना बेटर रहेगा। सो आप जैसे आरआरबी फॉर एग्जांपल आपका आरआरबी पीओ क्लियर हो जाता है, देन आप एक ऑफिसर बन जाओगे, तो आप क्या एक सोच लेकर इसमें एंटर कर रहे हो कि आपको क्या लगता है क्या डेवलपमेंट्स होने चाहिए, या आप जाकर मतलब उन चीजों में हेल्प कर सकते हो? क्या आइडियाज हैं आपके? मैम अभी जैसे ड्रोन टेक्निक्स बहुत यूज में आ रही है एग्रीकल्चर के लिए, अभी स्टार्टअप हुआ है एक, तो मेरा है कि मैम अगर मैं फार्मर्स को परसू कर पाऊंगा, इसमें परसुएड कर पाऊंगा कि आप ये टेक्निक्स यूज कीजिए, आपका टाइम कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, फर्टिलाइजर्स भी कम यूज होंगे आपके। एंड आप रेडी हो रूरल एरिया में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, देन आप वहाँ सर्वाइव कर पाओगे? यस मैम, डेफिनेटली। डेफिनेटली, पक्का? जी जी। What is main functions of Reserve Bank of India? सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी of the money market in India. It also issues currencies and foreign exchange. So, if Reserve Bank of India thought they can issue any quantum of currency. No, sir. Reserve Bank of India has to store a amount of gold reserves, और उसके रेशो में ही आप Yes. money. To increase the gold reserve, Prime Minister has brought 2 schemes. Sorry, sir. I'm not up to date with that. What do you mean by Swarna Gold Bond? Sorry, sir. फिस्कल not- पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? Monetary policy. Sorry, ma'am. It's I'm not okay. sure. पढ़ लीजिएगा। जी मैम। एसएलआर जानते हैं जी मैम। क्या है? मैम ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, Okay. जो एक बैंक को अपने एनडीटीएल का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। ये किस फॉर्म में होता है? मैम ये लिक्विडिटी गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के उसमें Okay. होता है। और सीआरआर किस फॉर्म में होता है आपका? मैम सीआरआर कैश के फॉर्म में होता है। ओनली? जी मैम। गोल्ड भी हो सकता है? मैम कैश। कैश, बिकॉज कैश रिजर्व। जी मैम, कैश Right. रिजर्व। कितना है इस टाइम करेंट में? सॉरी मैम, मैंने अभी लास्ट एमपीसी फॉलो नहीं किया। ओके ओके, तो चारों अपडेट कर लीजिए। जी जी मैम। ठीक है। What is priority sector advance? सॉरी सर। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना है आपने? जी मैम। तो इसके बारे में क्या जानते हैं? मैम किसान क्रेडिट कार्ड एक एडवांस है मैम, हैसल फ्री लोन मिलता है फार्मर को। Okay. एक पहले एक हैसल होता था कि आपने लोन लिया, रीपेमेंट की, फिर से आप अपना प्रोसेस शुरू कीजिए, हाँ जी। पेपर वर्क, और इसमें मैम वो हैसल बचता है इंसान का। Okay. Now the banks are writing off the loans and advances because of so many reasons. Is it good? Sir, in a way, sir, it's good because in the In end, which bank, way it is good? sir, in the end, bank has to make some money to survive. No.
See, I availed a loan 10 lakhs or 5 lakhs. The government, one reason or other, it is written off. I need not pay any amount. Is it good? Sir, I quite didn't understand the question. Okay. On account of some reasons, on account of COVID or some floods, natural calamities, the government of India instructing the banks to return off the loans and advances. The borrower need not pay. Is it good? Sir, in these situations, the borrower already going through tough times, and it is the basic duty of the government to help the Agreed. citizens. Bank is giving others money. See, they are lending money which they received by way of deposits. I deposited 100 rupees, out of it 50 rupees was lended to you people. Yes, sir. Is it good to retire? But sir, the government will give the money to the bank. How? Printing of currency. No, sir. No, sir. Ah. Not through printing of currency. Then Through securities, sir. The government will pledge that they'll give the amount of through the government securities. what has to be pledged? Sir, I'm not sure, sir. Okay. If the loans are from agriculture, NABARD will refinance to the banks. That will facilitate the banks to have the money circulation. Okay. If the money circulation is more, what the Reserve Bank of India will do? Sir, the Reserve Bank of India will increase the repo rate, which will further increase the loans. Further increase the loan. Money circulation is more. If Reserve Bank of India increases the loan, money circulation will be less or high. Sir, I was saying that the loan interest on the banks, which the banks are giving the loans, that interest will go up, and people will take less loans in that case. The Reserve Bank of India will decrease the credit facilities. Yes, sir. Credit squeeze. This is called a monetary policy, credit squeeze. Very good. Right. The Reserve Bank of India particularly concentrated on agriculture. And what are the subsidiary schemes available for agriculturists? Sir, KCC is available. Sir, in Insurance. yes, sir. The cash crop insurance is also there. Sir, there is also some PM FBY के बारे में सुना है आपने? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. जी, yes, ma'am. That is insurance. जी, जी, sir. Good. फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कोई स्कीम थी, आपको याद है? प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के. What is the benefit on this account? Sir, it's basically start from a zero balance. Okay. So the people will not feel कि हमारे जेब से पैसा जा रहा है. Okay. So they will include in this. What is the benefit to the account holder? सर, अकाउंट होल्डर अगर एक पर्सन के पास कैश रखा है घर पे, वो बैंक में रखेगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा. घर पे सर वो सिर्फ कैश रखा रहेगा उसका. There is no use of that. Okay. Any insurance is there in PMJDY? सर, DICGC इंश्योर्ड करता है हर पब्लिक सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के 5 लाख तक के सम को. What is Jeevan Bima Yojana? सर, it's a life insurance. Where in which account it is applicable? सर, प्रधानमंत्री जन धन योजना. जीवन बीमा और जीवन ज्योति दोनों में क्या फर्क है? जीवन बीमा योजना. Then sir, Suraksha Bima Yojana. Suraksha Bima, that one is for health insurance, and Jeevan Jyoti is for life insurance. Life insurance, okay. That is a death policy. How many times the government will pay? Sir, if a person can die only once, sir. क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने सुना है? तो इंडिया में क्या अभी इंडिया में मैम रिसेंट बजट में 30% टैक्स क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अवेल कर दिया था गवर्नमेंट ने, और 1% का टीडीएस. तो इंडिया में इसका आना कितना सही है आपके लिए? एट प्रेजेंट इंडिया इज नॉट रेडी फॉर क्रिप्टो करेंसीज बिकॉज अभी अवेयरनेस इतना नहीं है. स्कैम हो सकते हैं बहुत ज्यादा. जी. अभी आप बताएं करेंटली इंडिया में क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन चल रहा है कि रिसेशन? करंटली इन्फ्लेशन एंड रिसेशन दोनों चल रहे हैं मैम. ओके. रीजन? रीजन मैम, इन्फ्लेशन का कोई 2 रीजन आप बता सकते हैं कि क्यों इंडिया में इन्फ्लेशन है? मेजर रीजंस जो भी आपको याद है. मैम, सप्लाई, मनी की सप्लाई अभी ज्यादा है और डिमांड भी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से सब कुछ महंगा होता जा रहा है. रिसेशन का क्या कारण है इंडिया में?
मैम जीडीपी जब जीडीपी ग्रोथ आपकी नॉमिनल या नेगेटिव में रहेगी तो रिसेशन फॉलो करेगा, उसको लैक ऑफ जॉब्स तो फॉलो इसके पीछे कोई अभी करंट रीजन जो आपकी नजर में हो? कोविड मैम, और और मैम यूक्रेन Yeah. रशिया वॉर इज आल्सो। What is IPO? सर इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। What it means? Sir, when a private company wants to go public, they will issue their shares to the public. What is that share is called? Shareholders. What is primary market? Sorry, sir. The place where IPO is sold. What is secondary market? Sorry, sir. What is the work of SEBI? Ma'am, SEBI regulates the capital market. Okay. Chairman of SEBI? It's Madhu Puri Bush. I'm not sure the pronunciation is right or not, but Okay. yeah. What is money market? Sir, money What is market. available in the money market? Sir, it basically deals with the cash for cash flowing in India. Only Money market cash. cash is available. Yes, sir. Only cash. 200 rupee note, 500 rupee note, 2000 rupees note they will sell. And also checks and Yeah. negotiable Do you instruments. know about the certificate of deposit? Yes, ma'am. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में बैंक इशू करते हैं मार्केट से पैसा लेने के लिए। CP? सर कमर्शियल पेपर्स सर आई एम नॉट श्योर कमर्शियल These two पेपर। instruments are money market. Money market. Yeah. Not cash. Cash. That's why I'm asking. What is the minimum amount of CD? सर इट्स 1 crore and multiple of 1 crore. Good. Okay. How mutual funds are sold? Sir, mutual funds are sold through a demat account, sir. You can buy through a demat account. How can I buy? Sir, you have Can to I have. buy 550 rupees mutual fund? Sir, sorry, sir. What is the minimum Sir, amount? sorry, How sir. it is sold? I don't have a mutual fund with me, so I never studied about that. Okay. SIP की full form पता है आपको? And systematic investment plan. It deals with the mutual funds. What is safe deposit locker? Yeah. Sir, sorry, sir. I didn't get that. Okay. You are having how much of gold you are having With me, sir? with you? 0, sir. 0. So after marriage you will get. Let's see, sir. Okay, lucky. Where you will store the gold? Where you will keep? I will not come. Don't worry. आप love marriage करोगे कि arrange marriage? Ma'am, it depends. It depends. Okay. Which one you prefer? Right now, I'm focused on my career, sir. Okay. And later on? Like there is no best friend in his life this time. Yes, sir. No, by this time you might have a best friend of yours. Yeah. Or not? Is it not? Sir, I didn't get this, sir. Are you not having any best friend? I have friends, sir, but everyone is busy and I have to focus on my studies. So Okay. I don't have the Several time. people are To, best friends. Huh? so I have a group of 3 Suppose people. So, एक condition हम आपके सामने रखते हैं. जी ma'am. Suppose आपको during preparation या after the job आपको कोई लड़की पसंद आती है. जी ma'am. तो आप शादी के लिए चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं और आपके पेरेंट्स नहीं एग्री करते हैं. एनी हाउ वो एग्री नहीं करते. हम ये आंसर नहीं सुनना चाहते कि आप उनको कन्विंस कर लोगे. ठीक है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ है कि मेरा लड़का ऑफिसर बन गया है एंड जो लड़की वाले हैं वो उतना स्पेंड नहीं कर सकते. ठीक है, कंपैटिबिलिटी उन्हें नहीं दिख रही बिकॉज हर माँ बाप के कुछ अरमान होते हैं. तो उस केस में आप क्या डिसीजन लेना चाहोगे? Ma'am, for your first question, my parents is everything for me. जो वो decide करेंगे, that is the priority. And Okay. for your second question, I'm dowry. I'm against dowry. तो अरेंज मैरिज में भी आप नहीं लोगे ना? कोशिश यही रहेगी मेरी मैम की नहीं. कोशिश मतलब ले सकते हो आप. मैम इट डिपेंड्स ऑन दैट टाइम. जी. ओके. एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट. वेरी गुड. What is bank working hours, bank business hours? Sir, at present it's 10 to 5, but for the public it works till the 4 p.m. That is business hours is 10 to 4, working hours is 10 to 5. While opening the savings bank account, we have to give a nomination. Yes, sir. Can I inform to the nominee? Well, See, for instance, you are depositing 1 lakh. You are giving nomination. Your best friend name. Sorry, sir. I have no idea about that. No idea. Sorry, sir. Okay. You are opening a savings bank account. You are giving a nomination.
your father, mother, or somebody, can the bank disclose these things to No, the nominee? no, sir. I think not, sir. Okay. How many nominees can I give? One is sufficient. Only one. आप बताइए स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है? मैम NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो टाइम डिपॉजिट्स ले सकते हैं और लोन्स बांट सकते हैं. ओके वेयर स्मॉल पेमेंट्स बैंक मैम उनका 75% PSL को जाता है. उनका बेसिकली RRBs के जैसे काम करते हैं. ओके ओके. ये लोन दे सकते हैं? जी मैम. कि दोनों दे सकते हैं? स्मॉल पेमेंट्स बैंक दे सकते हैं ओके. और NBFCs भी दे सकते कौन सी ऐसी बैंक है जो कस्टमर्स को डायरेक्ट लोन नहीं देती? ऐसी दो बैंक बता दीजिए. हैं. मैम नाबार्ड और RBI. ओके. और भी कोई है? अच्छा, कोई एक ऐसा स्टेट जहाँ पर अदर स्टेट का कोई भी पर्सन लैंड नहीं बाय कर सकता है? Do you know about this? मैम आई थिंक इट्स हिमाचल प्रदेश. Good, Mr. But overall is very good. Excellent. Excellent. Yes. Avish. It's done. Yes. Right. Anything may help you? Yeah, you can ask anything. सर एक तो मेरे को मेरा गैप ईयर का लग रहा है कि मैं उसको कैसे करूँगा कवर. वही है मेरा मेन सर. मेरा पॉइंट लास्ट ईयर के SBI में मेरे को उसी पे नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा चले गए थे मेरे कि आप कि आपने क्या मतलब आप जॉब कर रहे थे फिर आप यहाँ क्यों आए हो. और इस सब के ऊपर यूजुअली सभी कर रहे हैं आजकल. सारी इंजीनियर ही आ रहे हैं SBI में. ऐसा तो कुछ पैसा तो है ही नहीं उधर. नहीं. तो आप एक बात ये भी बोल सकते थे ना कि आपने क्या बोला कि आपने 2 ईयर जॉब करी, देन फ्रॉम 3 years you are preparing, right? So you can at this point 3 years for monetary benefit you are conducting tuitions, you are attending tuitions. Yeah. Like that you can do compensate. home tuitions. Yes. Yeah. For 3 years I'm very particular about joining in the bank because already my sister is there. I know about the banking industry. Yeah. So I'm having an ambition and passion to join in the bank. Yeah. So 3 years I am preparing simultaneously. And सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मैं यहाँ पर हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्री और मेंस निकाल कर आया. इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं. पढ़ रहा हूँ तभी निकलेंगे. लाइक दिस. लेकिन बात वही है कि आप बोल सकते जो भी रियल बोल दो. और जो भी टाइम अगर आपको लग रहा है कि ये 3 years गैप अगर मैं सिर्फ प्रिपरेशन के लिए बोलूँ तो आप बोल दो मैं होम ट्यूशन दे रहा हूँ या फिर मैं कोचिंग. बट वो पूछ सकते हैं आप किस सब्जेक्ट का दे रहे हो. तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट, फिर तो ये 3 सब्जेक्ट है मेरे पास. बैंकिंग का ही कोई सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, आप कोई भी उठा सकते हैं. ठीक, क्योंकि उतना नॉलेज तो आपको हो ही गया होगा कि आप इतना बता पाओ. ठीक है. तो वैसे वही है. बाकी पता है कॉन्फिडेंट रहना है अपने गैप ईयर्स को भी लेकर, क्योंकि मुझे लगता है 7-7 साल के लोग भी आते हैं गैप ईयर में, तो ये कोई मेजर इशू नहीं हो सकता. लेकिन थोड़ा सा वो गैप आ जाता है, मैं कुछ वर्ड्स भूल जाता हूँ तो वो वहाँ कवर करने में मेरे को दिक्कत आता है. नहीं, वो हो सकता है आपने जैसे जॉब करी तो वो आपके जॉब से रिलेटेड एक तो अगर कोई सिविल का वहाँ बैठा हुआ बंदा तो वो आस्क कर सकता है. अदरवाइज जिसको फील्ड का नॉलेज नहीं है देन दे विल नॉट आस्क अबाउट दिस. More than enough. Like I asked that सीमेंट का क्या ग्रेड. So that's these kind of questions they can put. Overall is very good because you have knowledge. You maintain the dress code. Yeah. Yes sir. ये सर मैं 6 घंटे ट्रैवल करके आया था इसलिए, और फिर मेरे को फर्दर ट्रैवल करना है इसलिए. Yeah, you can. Because already you attended, you know, dress code you will score 5 marks. कुछ आप मेरे को कुछ गाइड करना है. Thank you. Best of luck here. Thank you sir.